हे गाइस, टाइटल और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देख करके तो समझ में आ ही गया होगा विच मूवी आई एम गोइंग फॉर। सो मैंने सोचा क्यों ना गेट रेडी विथ मी शूट कर ले। आफ्टर ऑल गोइंग फॉर पठान मूवी यार। सो आई एम यूजिंग हेयर मेकअप फॉर एवर कंसीलर जस्ट टू कवर अप माई डार्क स्पॉट्स एंड ऑल। मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी एंड फटाफट से मैं इसको यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ अ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर टू हाईलाइट। तो मैं यहाँ पे पहले फटाफट से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और हाँ गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपने पठान मूवी देखी अभी तक या नहीं देखी। नहीं देखी है तो बिल्कुल फटाफट से जा कर के देख लो यार, क्या मूवी है यार। तो मैं यहाँ पे नार्स का कंसीलर से हाईलाइट कर रही हूँ एंड आई विल ब्लेंड इट विथ माई ब्यूटी ब्लेंडर। एंड हाँ गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ एंड हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो सो डैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई वीडियो। इसके बाद मैं अपने मेकअप को लॉक करूंगी यूजिंग कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम रिमेल लंडन। एंड हाँ गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको मूवी में सबसे अच्छा रोल किसका लगा। ऑब्वियसली शाहरुख खान तो अच्छा है ये, नो डाउट, एंड दीपिका ऑल्सो, बट ऑन द अदर हैंड जॉन वॉज ऑल्सो टू गुड। सो गाइज, बेस फटाफट से सेट कर लेंगे यूजिंग कॉम्पैक्ट। सो गाइज, हियर आई एम शेपिंग माई आईब्रोज यूजिंग मिक्याजी आईब्रो पेंसिल। क्योंकि क्या है ना, आप पूरा मेकअप कर लो बट विदाउट शेपिंग योर आईब्रोज मेकअप कभी कंप्लीट नहीं होता। यार मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ पठान मूवी को लेकर के। व्हाट अबाउट यू गाइज? एंड मूविंग टू द मस्कारा, दिस इज़ फ्रॉम रिमेल लंडन अगेन। और मैं यहाँ पे काजल भी स्किप करूँगी बिकॉज आई एम गोइंग फॉर वेरी लाइट मेकअप। तो गाइज, इंस्टेड ऑफ काजल आई विल अप्लाई डार्क ब्राउन शेड फ्रॉम स्मैश बॉक्स पैलेट ऑन माई लोअर लैश लाइन। एंड एज आई एम गोइंग फॉर अ लाइट मेकअप सो मैं यहाँ पे कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइट तीनों अप्लाई करूँगी बट बहुत ही लाइटली। और मैं यहाँ पे सेम हाइलाइटर लेके अपना इनर कॉर्नर भी हाईलाइट करूँगी क्योंकि क्या है ना, इफ़ यू हैव अ स्मॉल आइज देन इट्स अ मस्ट स्टेप। सो गाइज, हमारा बेस मेकअप एंड आई मेकअप इज डन। बाय द वे, दिस इज इट फॉर द आई मेकअप, ओके। एंड बिफोर अप्लाइंग लिपस्टिक आई विल लॉक माई मेकअप यूजिंग सेटिंग स्प्रे। दिस इज फ्रॉम मैक। एंड हाँ गाइज, हियर इज अ क्विक टिप फॉर यू। आफ्टर अप्लाइंग योर सेटिंग स्प्रे डोंट टच योर स्किन, लेट इट गेट ड्राई। यहाँ पे बस हवा 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 करते रहना है। और यहाँ पे मुझे वो गाना याद आता है, हवा 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 हवाई। तो जब तक ये ड्राई होता है, लेट्स मूव टू द आउटफिट। तो आई एम गोइंग फॉर फुल ब्लैक आउटफिट टुडे विद दिस ब्लैक टॉप, ब्लैक लेदर पैंट। वैसे आई एम लुकिंग क्वाइट गुड यार। ओके गाइज, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आई एम गोइंग फॉर दिस क्यूट लिटिल ईयरिंग्स। दिस इज फ्रॉम शीन। And my golden black bracelet with some finger rings. So that's it for the accessories. Let's move to the lipstick. So मैं यहाँ पे कोई bright या bold shade में नहीं जाऊँगी. I will go for nude shade and this is from Maybelline. So guys, after the lipstick, makeup and outfit is full done because obviously without lipstick makeup कैसे complete होगा. तो let's move to the hair. क्योंकि मेरा hair थोड़ा oily हो रहा था, so I thought to make some bun and here I am. So guys, after this, to give that fine look, I will set it with my hair setting spray. This is from L'Oreal. And guys, here's my boots again in black. As I told you, everything is going to be black and my hoodie also black. तो भाई जब भी पहनूँ ना यार जैकेट तो मेरा दूसरा स्लीव मुझे मिलता ही नहीं जल्दी। So at last मिल गया। So this is like this. I will show you my final look. यार, am I missing something? Makeup, accessories, outfit, everything is done. Perfume. Obviously, how can I miss my perfume? This perfume, I love it. This is from Thamin, London. And guys, let me tell you, if you are looking for some long-lasting perfume, you must go for it. And here's my final look. So guys, let me show you with the hoodie how it looks. So here's my final look with my hoodie, full black. Actually, black मेरा favorite color भी है. What's your favorite color? Let me know in the comment box. And guys, now I have to run because ready होने के चक्कर में कहीं movie ना छूट जाए. So I have to run. Watch till the end. So here I am
Going for the movie on the way.